Bismillah ar-Rahman. Well, students, we discussed noise pollution earlier, how noise is created, what effects it have. And now, it's a very interesting topic about importance of acoustics. First of all, try to understand what is acoustics. It is the study of sound, how it is created, sent and received back. So acoustics is the study of sound, its creation, transmission and reception. That study is known as acoustics. And what is the importance of study? Because this is how you can decrease noise pollution. This is how you can transmit sound in a better way so that it is easily audible without any disturbance, and then how it is received back also. Acoustic protection is another interesting phenomena of acoustics. It is a technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces. What is acoustic protection? It is the technique, or it is the method which is used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces. You use soft and porous surfaces so that sound is absorbed, and this is known as acoustic protection. A reflection of sound, as you know, is prominent, is more, is easily distinguishable if the surface is rigid and smooth. If the surface is smooth and rigid, strong surface, rigid body is that which does not change its shape when a force acts upon it. So a reflection of sound is prominent, is more, if surface is rigid, strong and smooth. And reflection of sound is less if surface is soft and irregular. This wall is a rigid wall. When sound waves strike the wall, they are rebounded back. And it is plane also, it is smooth also. But if it's a soft surface, it's an irregular surface. An irregular surface, what does it do? It reflects sound in different directions. Suppose this is an irregular surface. One wave will come and get stuck here. One will come here. One will come here, get here. So it gets reflected in different direction. So an irregular surface also decreases the reflection of sound. And soft porous materials such as draperies, kapda jaise hota hai, and rugs, carpets, mats, they absorb large amount of sound energy. वो बहुत तवानाई absorb कर लेते हैं because they are soft surfaces. They are not reflecting it in that manner, and thus quiet echoes को वो कम कर देते हैं, खामोश कर देते हैं, and they soften noises. So please, I'll come again. Soft porous surfaces or soft porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound, and thus they quiet echoes and soften noises. Okay. Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. So wherever it is required to reduce sound pollution, then you place rugs and carpets, and on the walls you place such porous material, these draperies, etc. Care, of course, has to be exercised when using acoustic protection material, because if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, the sound level may be too low for the audience. You have to strike a balance between how much sound should be reflected so that people sitting in a hall of say 500 people can hear it in every nook and corner of it. So the sound is easily audible also, it can be heard also, and without reverberations or echoes in it. So you have to strike a balance between how much sound is to be absorbed and how much sound has to be transmitted back or reflected back. So care has to be exercised when using acoustic protection material.
Because if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, the sound level may be too low for the audience. Now we come to another interesting phenomenon of sound, which is reverberation. Reverberation. Reverberations. What is that? It is multiple reflections are called reverberations. You know, when different surfaces start reflecting from different directions and there are multiple reflections taking place, then it becomes a reverberation, a disturbed kind of a sound of many echoes. You know, not one or many echoes coming out with it. So multiple reflections are called reverberations. It happens when does it happen? It happens when sound reflects from the walls, from the ceiling, from the floor of a room, and reflecting surfaces are too reflective. यानी जो सतह है जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं, दीवार से भी हो रही है, छत से भी हो रही है, फ्लोर ज़मीन से भी हो रही है, बाकी जो चीज़ें अंदर रखी हैं उनसे भी हो रही है. When they are too reflective, then what happens? Sound becomes garbled. आवाज़ जो है आपको ठीक तरीके से सुनाई नहीं देती, वो it becomes garbled. Therefore, in the design of lecture halls, यानी जब भी आप लेक्चर हॉल्स को, कॉन्फ्रेंस हॉल्स को, ऑडिटोरियम्स को, थिएटर हॉल्स को, व्हेन यू डिज़ाइन दिस हॉल्स, ए बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रेवरबरेशन कि कितनी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं एंड एब्जॉर्प्शन और कितनी आवाज़ जज़ब हो रही है मुख्तलिफ चीज़ों में जो दीवार के साथ लगा रखी है ताकि आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाए. सो यू हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन रेवरबरेशन एंड एब्जॉर्प्शन. One way of doing so is to place reflecting surfaces behind the stage to direct sound to the audience. So stage के पीछे जो आप, you know, if you place reflecting surfaces behind the stage, then the sound coming, striking over there is also sent back to the audience so that they can hear very easily. So one way of doing so is like this. Another way is to keep the ceilings curved, and when the ceilings are curved, they also help in this thing, and that is why ceilings are curved also. Why are ceilings of hall curved? Generally, the ceilings of lecture halls, conference halls, theaters are curved so that sound after reflection may reach all the corners of hall. You know, a surface is like this of the ceiling, it is curved, or it is like this. Now when sound strikes there, it goes there, strikes there, it goes there, it goes there. So you want that sound should go into every nook and corner. So you place that kind of, you make the surfaces of the ceiling curved, and that helps in sending sound to everywhere, to every place. So generally what they do is, the ceilings of lecture halls, conference hall, theatre are curved so that sound after reflection may reach all the corners of hall. I have written everything on the board. Why? And I repeat it from there is because I want you, if there is some word which you have not understood, you can see it on the board also. And I try to use all those words and sentences which are written on the board so that it becomes easy for you to then see it on the board and understand what I am saying it. So generally after they are made curved, and in this way sound can reach all corners of hall. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage. You must have noticed sometimes, you know, behind the stage they place curved sound boards, you know, a kind of a, जैसे गत्ता होता है, so curve का क्या लगा देते हैं पीछे, a hard surface, rigid surface का. They place curved sound boards behind the stage so that sound after reflection is distributed evenly across the hall. Okay, when it is like this, now suppose this is a sound, this is a source, and there's a curved surface around it. One goes here, comes here, second goes here, comes here, third goes. So in this way you can spread to every corner of the room. And this is what a curved surface does. Sound from a source of sound. This is the source of sound. S is the source. Suppose this is the source. This is the source of sound. Sound waves goes here and reflected back, goes here, reflected back, goes here. And in this way they are reflected back evenly, and curved surface helps to send the sound everywhere. So I'll recuperate this portion again. I'll recapitulate for you.
What is acoustic? First thing that you have to remember is, what is acoustic? It is a study of sound, its creation, transmission and reception. Reception का मतलब है जब वो वापस रिसीव होती है. So what is acoustic? It is the study of sound. Number one, ये आवाज़ के मुतालिक रिसर्च करना, स्टडी करना, तालीम हासिल करना is known acoustic. And what do you read in that? You read its creation, कैसे पैदा होती है, its transmission, कैसे transmit करते हैं, and reception, कैसे वापस receive होती है. So that is known as acoustic. Importance क्या है इसकी acoustics की? Importance ये है कि when you know acoustics, then you can understand, you can have protection against it. कि कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आवाज़ गूंज पैदा ना हो, रेवर्बरेशन पैदा ना हो, आवाज़ ऑडियंस तक जाए, ठीक तरीके से सुनाई दे, हर नुक एंड कॉर्नर में पहुंची जाए. What is sound acoustic protection? Now another topic, another question that may be coming over there in the exams is, what is acoustic protection? The technique or method, यानी ये ऐसी कोई टेक्निक है या कोई मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एब्जॉर्ब, जज़ब करने के लिए अनडिज़ायरेबल साउंड्स, ऐसी आवाज़ें जो कि आप नहीं चाहते कि वो सुनी जाए, अनडिज़ायरेबल हैं, बाय सॉफ्ट एंड porous surfaces is called acoustic protection. The technique or method used to absorb undesirable sounds by using soft and porous surfaces. Soft surfaces और porous, यानी porous का मतलब है उसमें मुसाम होते हैं. जो मुसामदार surface होती है उसमें जो sound की wave जाएगी अंदर, वो अंदर चली जाएगी, उस सुराख में से absorb हो जाएगी. So that is how you lessen the effect of it, and this is why it is called acoustic protection. It is a technique or method which is used to absorb undesirable sound by using soft and porous surfaces. Okay, I hope it is clear. Now, you know, reflection of sound is prominent. When is the reflection of sound very prominent? क्यों, किस वक्त reflection of sound जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नुमायाँ होती है? It is when the surface is rigid. Surface जो है ना वो rigid surface है, and smooth also. Smooth means कि वो उसके ऊपर surface उसकी plain है, उसके ऊपर कोई ups and downs नहीं, कोई bumps and bits नहीं है उसमें. Reflection of sound is less. Reflection of sound कम होती है if surface is soft and irregular. अगर वो surface soft हो और irregular हो, जैसे कि irregular surface का मतलब ये है जैसे कि ऊंची नीची हो, bumps strips वाली, like this. Irregular surface, a smooth surface is straight like this. Okay, so reflection of sound is less, कम होती है reflection अगर surface smooth and irregular हो. Now soft porous materials, यानी soft materials and porous मैंने मुसामदार, such as draperies, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के draperies होते हैं, पर्दे curtains लगाए हुए अपने draperies में आते हैं, seats रखी हुई जिसमें cushion seats होती हैं, जिसमें sofa types होती हैं, that is also. So soft porous materials such as draperies and rugs का मतलब जैसे carpets बिछाए होते हैं, छोटे छोटे अपने चटाइयाँ बिछाई होती हैं, soft and rugs. So soft porous materials such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy. ये तवानाई को जज़ब कर लेती हैं, and thus quiet echoes, और इस तरीके से गूंज को कम कर देती हैं, खामोश कर देती हैं, and softening noises, और आवाज़ को जो है ना soften कर देती है, नरम कर देती है. So how do you use you to lessen the echoes? You use this kind of material. Thus by using such material in noisy places, जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा होती हो, we can reduce the level of noise pollution. तो इस तरीके से जो noise pollution है उसको कम किया जा सकता है. But of course you have to exercise care when using acoustic protection, because you need the sound to be heard also, and you also want that the sound should not be garbled and sound should not be to an extent that it is not audible. So care has to be exercised when using acoustic protection material, because if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience.
सो ये इस दोनों के दरमियान में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है कि कितनी आवाज़ जो है वो एब्जॉर्ब करवानी है आपने है और कितनी आवाज़ को अपने ऑडिबल रखना है, ताकि कि सब जितने भी लोग हॉल में बैठे हुए हैं, 1000 हैं 2000 हैं, वो सुन भी सकें और आवाज़ में एको भी ना आए और आवाज़ में गार्बल भी ना हो और सुनाई भी ठीक तरीके से दे. So this is how you protect by striking a balance between the two. Now what is reverberation? Multiple reflections are called reverberations. You know, one reflection takes place from this place, second takes from this place, third from that wall, fourth from here, fifth from the ceiling, and different things. So when there are multiple reflections taking place in a certain hall or a theater, then that means that the sound is not audible, is not easily understood. So multiple reflections are called reverberations, and you pronounce it in a straight way, reverberations. It happens when sound reflects from walls, ceiling and floor of a room, and reflecting surfaces are too reflective and sound becomes garbled. Therefore, in the design of lecture halls, auditoriums or theater halls, a balance must be achieved between reverberations and absorption. One way of doing so is to place reflecting materials or surfaces behind the stage to direct sound to the audience. Then we talked about why ceilings of halls are curved. You must have noticed this thing that they are curved in this manner. You know, they are normally curved. Ceilings are normally made in a curved manner. Why are they curved? Generally, the ceilings of lecture halls, conference halls, theaters are curved so that sound after reflection may reach all corners of the hall. So जो आवाज़ यहाँ से इसके ऊपर आई है वो इधर आ चली जाएगी, जो ये आवाज़ यहाँ पे आई है वो इधर आ जाएगी. So it can reflect at all corners, so that is why they keep the ceilings curved. Generally, the ceilings of lecture halls, conference halls, theaters are curved so that sound after reflection may reach all corners of the hall. Sometimes curved surfaces, board also placed behind the stage, so that sound of reflection is distributed evenly across the hall. बाज़ दफ़ा स्टेज के बैक साइड पे भी इसी तरीके से कर्व्ड सर्फेसेस रखी जाती हैं, सो दैट वो भी आवाज़ को जो रोशनी, जो आवाज़ की शुआएं पीछे की तरफ जा रही हैं, जो वेव्स जा रही हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस की तरफ आ जाए. सो बिहाइंड द स्टेज ऑल्सो द प्लेस कर्व्ड सर्फेसेस. And this is the diagram which shows that suppose this is the source, S is the source of sound, it goes here, it goes here, how curved surface helps in directing sound at different places. Similarly, if this is a curved surface, sound, this is the source of sound coming, or suppose this is the speaker, sound goes like this, comes here, like this. So all of them is directed towards the audience in this, so that's how curved surfaces help. Now the next topic that we need to cover is audible frequency range. Audible का मतलब जो सुनाई दे सके, frequency का मतलब है जो आवाज़ की frequency है और उसका range कितना है, किस किस्म की आवाज़ की frequency है जो आप सुन सकते हैं. तो audible frequency range, sound is produced by a vibrating body. ये आपको याद अपने उसके अंदर पहला टॉपिक था, how sound is produced by a vibrating body. So sound is always produced by a vibrating body. Second, नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है, इंसानी कान जो है, ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुन सकता है. आई कम अगेन, द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज़ 20 हर्ट्ज to 20,000 hertz. Hertz का मतलब है cycle per second. 1 hertz means 1 cycle per second. Hertz CPS, cycle per second. और cycle होता है कि मेन पोजीशन है इधर आ जाना, एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहाँ से वापस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर फिर वापस आ जाना. दिस इज़ 1 cycle. So sound when goes like this, it's a vibrating body. It goes like this, comes back again like this. So normal human ear can hear sound of between 20 hertz to 20,000 hertz. This is the only. Below 20 cycles per second से नीचे की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, और 20,000 cycles per second से ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते. Cycle per second को हम कहते हैं hertz. In other words, human ear cannot hear sound less than 20 hertz or greater than 20,000 hertz. ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग जो हैं, दे कैनॉट हियर बिलो 15,000 हर्ट्स. 15,000 CPS से नीचे की आवाज़ बूढ़े लोग नहीं सुनते, बिकॉज ईयर ड्रम जो है वो उस रैपिडली, उस तेज़ी के साथ नहीं आगे पीछे जा सकता आवाज़ को पहुंचाने के लिए, जैसे कि यंगस्टर्स का होता है.
The range of frequencies which a human ear can hear is called audible frequency range. So audible frequency range क्या है? वो रेंज जिसको इंसानी कान सुन सकता है, जो 20 से लेके 20,000 CPS तक की आवाज़ जो है उसको सुन सकता है. Now ultrasound. What is ultrasound? Ultrasound sounds of frequencies, जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज़्यादा हो उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और साउंड मैंने आवाज़, यानी कि वो आवाज़ जो कि बियॉन्ड उसके होती है, जो कि सुनाई दे सके. So sounds of frequency beyond 20,000 hertz are known as ultrasounds. They are inaudible to the human ear. इसका फ़ायदा क्या है, यूजेस क्या है अल्ट्रासाउंड्स का? अल्ट्रासाउंड वेव्स कैरी मोर एनर्जी. जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा तवानाई ज़्यादा लेके जा रही है वो. एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑडिबल साउंड. साउंड ऑडिबल साउंड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इज इक्वल टू लैम्डा एफ. ली V इज इक्वल टू, यानी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इसका मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा आ गई है. The wavelength of ultrasound wave is small and therefore it is useful for detecting small objects. I come again, uses. Ultrasound waves carry more energy and higher frequency than audible sound. Therefore, or according to the equation V is equal to lambda f, the wavelength of ultrasound waves is small and is useful for detecting small objects. तो छोटी छोटी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर लेती है. Number 2, it is used in medical and technical fields. Ultrasounds को technical और medical field में use करते हैं. 3, medical field में it is used to diagnose and treat ailments. मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को diagnose करने के लिए और उसको treat करने के लिए इस्तेमाल होती है. For diagnosis, waves enter body. Ultrasound जिस्म में दाखिल होती है एंड आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गन. जिस्म के मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो रिफ्लेक्ट होती है, जैसे उसके रास्ते में हड्डी आ गई है या गोश्त आ गया या कोई टिश्यूज़ आ गए हैं. दे आर रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ और ट्यूमर्स. किसी का अगर कोई ट्यूमर है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्टेड वेज आर एम्पलीफाइड. इनको एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा कर देते हैं टू फॉर्म एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑन स्क्रीन. सच इमेजेस हेल्प टू डायग्नोज different kinds of ailments. So ultrasound is used to find out, to diagnose about ailments and to treat them also. They are also used for treating. Powerful ultrasounds are used for removing clots. अगर खून में जो clots पैदा हो जाते हैं, arteries के अंदर जो पैदा हो जाते हैं blood clots, उनको remove करने के लिए भी ultrasound को use करते हैं. Powerful ultrasounds are used for removing blood clots एंड डायग्नोसिस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. जो थायरॉयड ग्लैंड यहाँ पे जो बड़ा सा लोगों का बढ़ जाता है उसको भी ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर लोकेटिंग अंडर वाटर डेप्थ्स एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो समुंदर के गहराई में भी इस्तेमाल उनको किया जाता है अल्ट्रासाउंड्स को, ताकि वो नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स को देख सकें. कोई अगर फर्स्ट किया बैरी जहाज़ डूब गया, कुछ सबमरीन डूब गई और दे वांट टू सी सम अदर थिंग्स ऑल्सो, तो वो उसको मालूम करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होते हैं. सेकेंडली दे हेल्प ऑल्सो टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन, के किसी ओशन की गहराई कितनी है. यूज फॉर लोकेटिंग अंडर वाटर डेप्थ्स, गहराई मालूम करने के लिए, एंड लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ जो नीचे समुद्र में डूब गई है उसको मालूम करने के लिए. दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार. इस टेक्निक का नाम है सोनार, SONAR, जो कि मुखफ़फ़ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. यानी SO साउंड, N से नेविगेशन, A से रेंजिंग. This technique is used for sound navigation and ranging. इसमें होता क्या है, you send a sound wave down, और जिस वक्त आपने उसको नीचे की तरफ ट्रांसमिट किया उसको टाइम नोट करते हैं. नीचे वो स्ट्राइक होकर सरफेस से वापस आती है, वो टाइम नोट करते हैं. इस टाइम नोट करने से टाइम लैप्स के ज़रिए आप V इज इक्वल टू dt फार्मूला लगा के उसको मालूम कर लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, हाउ मच टाइम हैज़ टेकन टू गो डाउन एंड देन कम अप अगेन. So it is used there also. Sonar helps in finding shape and size of object. सोनार के ज़रिए अब ये मालूम कर सकते हैं कि ज़मीन के समुद्र में जो चीज़ डूब गई है वो कश्ती है या सबमरीन है या क्या चीज़ है. So sonar helps in finding shape and size of objects, and it is also a very useful, application of this ultrasounds is
इन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द, मसल जहाज़ है उसके पर हैं, उसके जो विंग्स हैं उसमें क्रैक्स पैदा होते हैं कॉन्स्टेंटली यूज़ करने से, किसी मशीन को कॉन्स्टेंटली यूज़ करने के उसके मशीन के अंदर मेटल फटीग की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। उन सब चीज़ों को अल्ट्रासाउंड से मालूम कर लेते हैं। क्रैक्स इन हैवी मशीनरी लाइक टर्बाइंस में, एंजिन्स में या शिप्स के एक्सेट्रा, उसको मालूम कर सकते हैं। इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड्स। एंड अल्ट्रासाउंड की एक और बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड to kill germs and bacteria, and it is also one of the applications. So going over this thing, what is audible frequency range? Between 20 cycles per second, 20 hertz to 20,000 cycles per second is known as audible frequency range. और जो less than 20 hertz होती है हम नहीं सुन सकते, more than 20,000 hertz आप भी हम नहीं सुन सकते। बूढ़े लोग 15,000 hertz से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकते। और ये जो रेंज है 20 साइकिल्स पर सेकंड से 20,000 CPS तक, इसे कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अल्ट्रासाउंड ऐसी आवाज़ें हैं जो 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज़्यादा की होती हैं। इसकी बेशुमार यूज़ हैं, इसके इस्तेमालात हैं, और मेडिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड आपने देखे होगा लगाए जाते हैं, ये ट्रीट भी करते हैं, डायग्नोज भी करते हैं बीमारियों को, और इसी तरीके से इसके ज़रिए हम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी, हैवी मशीनरी के अंदर क्रैक्स मालूम करने के लिए, उनके और किसी किस्म का टूट फूट हुई है उसको मालूम करने के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो, प्लस थर्ड इसकी एप्लीकेशन है इज़ अबाउट killing germs and bacteria. So I'll now expect you to please make notes of it and keep with you with diagram, etc. And if you have difficulty, please call me on the numbers given to you. Thank you.